Miss Srila Prabhupada. And beside that, we are even more fortunate that today this grace will enlighten us about Srila Prabhupada, Lila, Tattva, and Katha. And it is a great privilege for all of us that we are going to hear about Srila Prabhupada from someone who has been with Prabhupada, who has seen his holy character very closely. So thank you so much, Prabhuji, for showering your mercy on us. Your kindness may start now. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Someone will be doing translation also? Yes, Prabhuji, yes. Okay. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatarane He Guru Jnanadadina Bandho Swananda Data Kurunaika Sindho Bindavanasi Nihita Avatara Prasida Radha Pranaya Pracharan Namashishtam Anumapi Sachiputramatra Sarupam Rupam Tashagrajamurupari Matari Mushtavati Radha Kundam Girivaram Mahoradhika Madhava Samprapto Yasya Patita Kripa Shri Gurum Tam Natusi Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Nantad Putashayam Shri Chaitanya Mahaprabhu Nichopi Yat Prasadat Sad Bhakti Shastra Pavartaka Nityanandamaham Nomi Sarvanandakaram Param Harinama Padam Devam Avaduta Shiromani Lila Chalanivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannataya Te Namaha Taptakanchana Gaurangi Radhe Bindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindaye Tulsi Divyaye Priyaye Keshava Sicha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavachay Namo Namah Pancha Kopatu Vishya Kripa Sindhuve Patitanam Pavinebhyo Vaishnavyo Namo Namah. Please turn off your microphone, Prabhuji. Thank you. So today, the topic of discussion is Srila Prabhupada, from the point of view of Lila and the point of view of Tattva. आज का जो टॉपिक है वो है प्रभुपाद की लीला और प्रभुपाद के तत्व के बारे में, Because both things are very important to understand. क्योंकि ये दोनों ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए. What Prabhupada did on this plane of material understanding and who he is, Lila and Tattva. प्रभुपाद ने क्या किया मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और उनका लीला और तत्व को समझने के लिए हमारे Because without understanding Tattva, we may think of Srila Prabhupada in a material way. Oh, he's an aristocratic Bengali gentleman. अगर हम उनके तत्व को नहीं समझेंगे तो हम उनको सिर्फ एक बंगाली जीव समझकर मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या भौतिक बुद्धि के हिसाब से उनको एक बंगाली प्रांत से आए हुए मात्र के जीव तत्व के साथ जीव जैसा ही कॉमन जीव जैसा ही समझ पाएंगे. And certainly he was most aristocratic Bengali gentleman, but is that all he is? Not at all. प्रभुपाद जो थे एक एरिस्टोक्रेटिक बंगाली जेंटलमैन थे और उन्होंने कैन यू रिपीट सर once again प्रभुजी. That he is most aristocratic Bengali gentleman, but that's not all he is. प्रभुपाद जो बंगाली एरिस्टोक्रेटिक परिवार से आए हुए थे लेकिन जस्ट वो उतने ही में उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं है. To truly understand Srila Prabhupada, we should understand him from the point of view of Tattva, from the point of view of spiritual vision. श्रील प्रभुपाद को समझने के लिए उनके तत्व को और उनके विजन को समझना बहुत आवश्यक है. I'll give you an example of Tulsi Maharani. वैसे ही हमें तुलसी महारानी के तत्व को भी समझना बहुत जरूरी है. We can define Tulsi as a plant. She has leaves and roots and flowers and seeds and branches and chlorophyll, cellulose. Tulsi, if from one point of view, is a plant. अगर हम भौतिक दृष्टि से और भौतिक बुद्धि से अगर हम तुलसी के प्लांट को या तुलसी महारानी को देखते हैं तो वो एक मात्र सभी पौधों के जैसे ही एक पौधा है जिसका पत्ते होते हैं, स्टेम्स होती है, तना होता है, जड़ होता है.
But are we are we so foolish that we're plant worshippers? No, we're not plant worshippers. We're worshiping Brinda Devi, who appears before us in this form. तो हम सब लोग जो तुलसी महारानी का पूजन करते हैं, तो क्या सिर्फ वो एक प्लांट के लिए, जैसे कॉमन प्लांट होती है, उन सब के तुल्य उनको समझकर पूजा करते हैं या उनका वंदन करते हैं? So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur makes a beautiful prayer to Shrimati Tulsi Maharani, Vrinda Devi. श्री चक्रवर्ती पाद ने तुलसी देवी और वृंदा देवी के ऊपर में बहुत अच्छी स्तुति लिखी है. He says, Samasta Vaikuntha Shiromana Shri Krishna Sibandamana Danyadani Tatadikare Vishabhanu Putra Vrinde Namaste Charanada Vrinda. He said, offer my respectful obeisances to the lotus feet of Shrimati Vrinda Devi. मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ श्रीमती वृंदे देवी को उनकी लोटस फीट में. And that Goloka Vrindavan is the topmost planet amongst all the Vaikuntha lokas. Shiromana Shri is the topmost. गोलोक वृंदावन जो है, ये इस पूरी सृष्टि का सबसे टॉप मोस्ट धाम है. उसकी कोई तुलना नहीं है और किसी धामों से. And in that Goloka Vrindavan, Srimati Radharani herself has given jurisdiction for all the Lila of Radha Krishna to Vrinda Devi, who appears in this world as Tulsi Maharani. उस गोलोक वृंदावन में जो नित्य धाम है राधा कृष्ण का, वहां पे श्रीमती राधा रानी ने तुलसी मानी को एक विशिष्ट सेवा दी है, जो कि सभी लीलाओं में प्रथम है. She is Lord's Lila Shakti. तुलसी महारानी भगवान की लीला शक्ति है. In conjunction with Purnamasi Devi. इनका जो पूर्णमासी देवी है वो भी लीला शक्ति है, लेकिन पूर्णमासी देवी का विशिष्ट अवतार, विशिष्ट लीलाओं में योगदान रहता है, लेकिन जो वृंदा देवी का जो है योगदान विशिष्ट लीलाओं में रहता है, जो कि राधा और कृष्ण के बीच में है. And we pray to Tulsi Maharani, Radha Krishna Seva Pavo E Abhilashi, that my Abhilash, my desire is that you bless me to worship Radha Krishna. मेरी एक ही अभिलाषा है कि दोनों युगल सरकार की उनकी सेवा करूं. ये हम अपने तुलसी आरती में कहते हैं. We pray Eneve Dhanadara Shakiranu Koro Seva Adhikaro Diye Koro Nichadasi. Give me the Adhikar. Please bless me with the Adhikar to approach Radha Krishna. Make me your Dasi. हम रोज वृंदे देवी की तुलसी आरती में यही अधिकार मांगते हैं, यही उनसे विनती करते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा पाने की और उनके दासपन की हम उनकी सेवा करें. So can a plant do this for you? Can a plant bless you with Radha Krishna Seva? तो क्या ये प्लांट ऐसा हमें प्रोवाइड दे सकता है? प्लांट हमें राधा कृष्णा की सेवा प्रदान कर सकता है अगर हम उनको वृंदे देवी को सिर्फ एक प्लांट समझते हैं या सिर्फ एक पौधा समझते हैं? No, that soul that inhabits the plant of the body of Tulsi Maharani is Vrinda Devi, and that spiritual energy can propel us towards pure devotional service and the capacity to serve Radha Krishna in Goloka Vrindavan. जो वृंदे महारानी है वो हमें वो शक्ति देती हैं कि हम डिवोशनल सर्विस प्रदान कर सके, भगवान को हम उनकी अच्छे से सेवा कर सके गोलोक वृंदावन में. So be careful to look at Srila Prabhupada as just aristocratic Bengali gentleman. He's so much more than that, in exactly the same way as Tulsi is more than a plant. जैसा कि हमने अभी जो तुलसी महारानी का वर्णन सुना, उसी तरह एक प्लांट जैसा हमें भौतिक जीवन में ये प्लांट, ये एक पौधा हमें ऐसा लगता है कि ये भौतिक धरातल में प्लांट ही है, लेकिन वो उससे कहीं ऊंचा और उनकी स्थिति या उनका जो तत्व है वो बहुत अलग है. इसी प्रकार जो प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद, वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के द्वारा अगर उनका हम एक बंगाली परिवार से जन्मे हुए जीव समझकर हम अगर उनको देखेंगे तो वो बहुत गलत है.
So we make this prayer, He Guru Jnanada Dina Bandho Swanandata Kurunaita Sindhu Vrindavanasina Hitavatara Prasida Radha Panaya Pachara. Vrindavanasina Hitavatara means that Srila Prabhupada is a resident of Goloka Vrindavan who's come, avatar, he's come to this world to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुपाद गोलोक वृंदावन के निवासी हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। There's a nice story. My god sister, my esteemed god sister, Devi Shakti Mataji, had a conversation with a lady named Gita Sharaf. एक छोटी सी स्टोरी है जो कि प्रभु जी की गॉड सिस्टर है। प्रभु जी, can you repeat your name once again? Devi Shakti. देवी शक्ति माता जी, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ से जो डिस्कशन किया उसके बारे में प्रभु जी हमें स्टोरी सुना रहे हैं। So this lady, Gita Sharaf, related to her, Devi Shakti Mataji, that Srila Prabhupada told her that Krishna, I was in Goloka and Krishna instructed me, you go to the material world. ये कथा जो है माता जी को प्रभु जी ने जब बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं गोलोक वृंदावन से आया हुआ हूँ और एंड सभी लोग गोलोक वृंदावन में जाना चाहिए। And Srila Prabhupada said, material world, go, I don't want to go there to that place, no. तो माता जी ने कहा कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में ठीक हूँ और मैं नहीं जाना चाहती हूँ गोलोक वृंदावन में। But Krishna told him, I have work for you to do. You're to translate Srimad Bhagavatam and to distribute it widely all over the world. And Srila Prabhupada agreed to come. प्लीज कम अगेन प्रभु जी। That यस प्रभु जी। सो प्रभुपाद बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो भगवान बोले नहीं आप जाओ, मुझे ट्रांसलेशन का काम है, आई वांट यू टू ट्रांसलेट श्रीमद् भागवतम, इसलिए आप जाइए मटेरियल वर्ल्ड में। and Srila Prabhupada agreed to come. और प्रभुपाद मान गए कि ठीक है मैं जाऊंगा। So he's not like us. We're here in this world by our karma, by our material desires to enjoy in the material world. तो वो हमारी तरह नहीं है, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे कर्मों के कारण, लेकिन प्रभुपाद इस प्रकार से नहीं है। So several of Srila Prabhupada's godbrothers, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Yajavar Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, they all acknowledged Srila Prabhupada's special characteristic and said that he's Shaktivish avatar of the Lord. तो प्रभुपाद के बहुत सारे गुरु भाइयों ने भी, जैसे कि भक्ति रक्षक महाराज और भक्ति विज्ञान पुरी महाराज, उन सब ने भी माना है कि प्रभुपाद भगवान के शक्तिविश अवतार हैं। Especially empowered to spread Krishna consciousness all over the world. और वो इसीलिए आए कि भगवान का नाम प्रचार कर सकें इस जगत में। Chaitanya Charitamrita says, Krishna Shakti Binanahi Tar Pravartana. Then unless one has Krishna Shakti empowered by the Lord, it is not possible to spread Krishna consciousness. जैसे भगवान की शक्ति के बिना कोई भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। So how much Shakti, how much blessing did Srila Prabhupada receive from his Guru and from Sri Chaitanya Mahaprabhu? That is inconceivable. तो हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु से कितनी कृपा मिली है कि वो इसका प्रचार प्रसार कर पाए। But it's not that it came easily to Srila Prabhupada. बट ये इतना आसान नहीं था, इतना इजीली ये कृपा नहीं मिला। When he got off the Jaladuta in Boston Harbor, he said, I didn't know whether to turn right or turn left. तो प्रभुपाद जब जलदूत से बॉस्टन में पहुंचे, तब उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं। Now today, when our preachers travel, there's an airfare, there's tickets, air ticket is arranged, prasadam is arranged, comfortable accommodation is arranged, preaching engagements are set up, dakshina is there, everything is arranged. Srila Prabhupada had none of that when he came to America. आजकल जब प्रचार करने जाते हैं तो उनका फ्लाइट का टिकट, हवाई जहाज का टिकट पहले से हुआ रहता है, दक्षिणा मिली रहती है, उनको रहने का खाने का सब अरेंजमेंट रहता है, लेकिन प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं था। Practically speaking, he was starving. He was selling a book here and there just to get enough money to eat. प्रभुपाद की स्थिति ऐसी थी कि उनको खाने के लिए भी एक एक बुक बेचना पड़ता था, फिर जाके उनको कुछ लक्ष्मी मिलता था जिससे वो सब्जी खरीद पाए। And this went on for 1 full year. ये पूरा 1 साल तक चला। Imagine Srila Prabhupada, meditate on Srila Prabhupada in this way. आप सोचिए, कुछ विचार करिए प्रभुपाद की स्थिति पे।
how much he sacrificed for our benefit. कितना प्रभुपाद ने संघर्ष किया और हमारे लिए किया ये सब. And meditate on Prabhupada standing in New York City in the snow, in his little Prabhupada hat, his thin wool chadar, his thin sannyas robe, his white rubber slippers, standing in the snow of New York City, wondering, why have you brought me here to this horrible place? आप जरा सोचिए कि प्रभुपाद के पास एक पतली सी चादर है और प्रभुपाद बर्फीले जगह पर न्यूयॉर्क में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि भगवान मुझे ऐसे उग्र स्थान पे क्यों लेके आए हैं. Lord Krishna sent him there for this purpose, that we can be benefited. Ask yourself, would you be wearing tilak and kantimala if Srila Prabhupada had not come? तो आप सोचिए कि अभी आप तिलक कंठी माला धारण किए होते अगर प्रभुपाद न्यूयॉर्क ना गए होते. Would you be chanting holy name? Would you have a guru? Would you be coming to Mayapur, Vrindavan? Would you be going to temple? क्या आप अभी इस्कॉन जा रहे होते, मायापुर वृंदावन जा रहे होते, माला कर रहे होते अगर प्रभुपाद नहीं होते? Would we be talking on this Zoom अभी platform? हम पे क्या मीटिंग कर रहे होते अगर प्रभुपाद नहीं होते? This is all manifestation of Prabhupada's mercy. ये भी प्रभुपाद की कृपा है कि हम उनके बारे में आज कथा सुन पा रहे हैं. A manifestation of the Shakti he received from Chaitanya Mahaprabhu and his Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो जो कृपा प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु ने दी, उसी का ये रूप है कि आज हम भक्ति कर पा रहे हैं. So one may ask, if Srila Prabhupada is so empowered, why does he have to struggle so much? तो हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद के पास अगर इतनी शक्ति थी, वो शक्तावेश अवतार हैं, तो उनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? There's a couple reasons for that. उसके कुछ कारण हैं. Prabhupada struggled to establish ISKCON out of love for the conditioned souls, you and me. तो प्रभुपाद का एक ही कारण है कि उन्होंने इस्कॉन में बनाने के लिए इतना संघर्ष क्यों किया, क्योंकि प्रभुपाद हमसे बहुत प्रेम करते हैं. Out of love for his guru and out of love for the Lord. वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हैं. And another important reason, और एक और महत्वपूर्ण कारण, and that is that someone may ask, well, why was there no help for Prabhupada? He was there all alone for a year. No one came to help him for a full year. 4 साल तक के लिए कोई प्रभुपाद का मदद करने नहीं आया. The reason for that is that the world will see what is the standard of pure devotional service, and all the credit goes to Prabhupada. ये इसलिए ताकि जगत देख सके कि शुद्ध भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है. All those two things, that Srila Prabhupada did everything himself. तो प्रभुपाद जो है उन्होंने सब कुछ खुद से किया. He performed impossible tasks. उन्होंने इम्पॉसिबल कार्यों को कर दिखाया जो नहीं कर सकता कोई. To give the highest understanding of God, the irreducible understanding of God, Radha Krishna. तो उन्होंने सबसे ऊंची जो भगवान को समझने का स्तर है वो हमें प्रदान किया कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण हैं. To give this understanding to the lowest class of people. और ये इन्होंने किनको समझाया? जो सबसे निम्न कोटि के जीव थे उनको समझाया. On lower east side of New York City is not a nice place. और जो न्यूयॉर्क सिटी का लोअर साइड ईस्ट था वो इतना अच्छा जगह नहीं था. The alcoholics are there, the drug dealers, the thieves, the prostitutes, all low-class people are there in that area. And Prabhupada went there, he left Radha Damodar, he left heaven to go to hell. तो प्रभुपाद ने राधा दामोदर जैसा सुंदर स्थान, स्वर्ग जैसा स्थान छोड़ के कहाँ गए? न्यूयॉर्क के ऐसे स्थान पे जहाँ पे केवल लोग ऐसे थे जो ड्रग्स लेते थे, जो मदिरा पान करते थे और जो अवैध स्त्री संग करते थे. Sometimes Srila Prabhupada said that he would have to step over an unconscious alcoholic just to get into his apartment because they're lying on the ground completely intoxicated. तो कभी-कभी प्रभुपाद को अपने ही अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पैर रखना पड़ता था जो पूरी तरह से बेहोश है क्योंकि वो नशे से धुत है. So Prabhupada suffered and sacrificed so much out of love for us and out of love for God and his Guru. तो उन्होंने ये सब संघर्ष क्यों किया? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते हैं. And Lord didn't send any other person to help Srila Prabhupada so that he would get all credit for establishing Krishna consciousness all over the world. तो भगवान ने किसी और को क्यों नहीं भेजा उनका मदद करने के लिए? क्योंकि भगवान चाहते थे केवल और केवल उन्हें श्रेय मिले कि उन्होंने स्थापित किया है पूरा इस्कॉन. Because it was Srila Prabhupada
who introduced the chanting of the holy name to every town and village all over the planet, and it's still going on. क्योंकि प्रभुपाद हैं जिन्होंने स्थापना की है हरे कृष्ण महामंत्र की हर गांव हर एक स्थान पे, और अभी भी वो हो रहा है. Imagine for a moment, we take it for granted. We're chanting japa, we go to the temple, we have arati, we have our chanting of the Lord, our worship of the Lord. तो हम आजकल अपने जप को, मंदिर जाना, ये सब हम साधारण समझते हैं कि ठीक है, हम भी जप कर लेंगे, हम भी मंदिर चले जाएंगे. हमारे लिए बहुत साधारण कार्य बन चुका है. But that is going all over the world, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Somewhere all over this planet, someone is chanting Hare Krishna Mahamantra. लेकिन अगर हम इस पे विचार करें कि हरे कृष्ण महामंत्र हर जगह पर, हर स्थान पे, हर समय हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, 7 दिन हो रहा है, और 365 दिन पूरे साल हो रहा है. Somewhere in the world, there's Mangal Arti, there's Sandhya Arti, there's Rajbhog Arati, there's Tulsi Puja, there's Guru Puja. Somewhere in the world, this kirtan is going on 24 hours a day, all over the world. पूरे 24 घंटे में कहीं ना कहीं पूरे जगत में या तो मंगल आरती हो रही है, या गुरु पूजा हो रहा है, या भागवतम क्लास हो रहा है. कहीं ना कहीं ये कीर्तन किसी ना किसी रूप में हो रहा है. Srila Prabhupada wove a garland of the holy name, and he garlanded the whole earth planet with the holy name by his mercy. तो प्रभुपाद के पास एक बहुत ही सुंदर माला है हरि नाम का, और उससे उन्होंने पूरे जगत में डाल दिया है, और पूरे जगत में हरि नाम हो रहा है. Similarly, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, somewhere on the planet, there is a conditioned soul getting prasadam from the hand of an ISKCON devotee. तो हरि नाम तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ 24 घंटे उस हफ्ते में 7 दिन और 365 दिन पूरे साल में किसी ना किसी बद्ध जीव को भगवान का प्रसाद मिल रहा है किसी इस्कॉन भक्त के द्वारा. So we should remember these things, that Srila Prabhupada he's not just an Indian guru for India. We say, Paschacha Desha Tarane, that he delivered the Western world, but Srila Prabhupada delivered the whole world. Sarvaloka Tarane, he delivered the whole worlds. तो हम जैसे बोलते हैं प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में पाश्चात्य देश तारे हैं, लेकिन प्रभुपाद सर्वलोक तारिणे हैं, क्योंकि उन्होंने हर किसी का उद्धार किया है. So if we grasp the profound contribution, the immense contribution Srila Prabhupada made to the world, we should be inspired to help him. तो अगर हम इस पे विचार करें कि प्रभुपाद ने क्या किया है, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारे अंदर भी प्रेरणा जागेगी कि मुझे भी इनका हेल्प करना है, इनका मदद करना है इस मिशन में. Lord Krishna told the cowherd boys, Prana Arta Diyavacha Shaya Acharanam Sada, that you should worship the Lord with your prana, your life, your arta, your wealth, vacha, your words, and diya, your intelligence. भगवान ने गोप बालकों को बोला कि हमें भगवान का सेवा किस प्रकार करना चाहिए, अपना मन, वाणी, कर्म, हर प्रकार से भगवान का सेवा करना चाहिए. So we should be inspired to push on Srila Prabhupada's ISKCON as he established it. तो हमें भी इस बात का प्रेरणा मिलना चाहिए कि मुझे भी प्रभुपाद का मदद करना है इस मिशन को आगे बढ़ाने में. And we should cultivate personal relationship with Srila Prabhupada. और उसके लिए हमें प्रभुपाद के साथ एक निजी संबंध स्थापित करना पड़ेगा. And understand what powerful influence Prabhupada had in each of our lives. और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद का क्या महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में. That Srila Prabhupada is the preeminent Siksha Guru for all ISKCON disciples. सभी इस्कॉन के सदस्यों के लिए प्रभुपाद प्रथम शिक्षा गुरु हैं. And Srila Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita that Diksha and Siksha Guru are equal and identical manifestations of Krishna. तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन करते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं. That Prabhupada has entered our life. Any devotee who's come to ISKCON chanting holy name, participating in our program, he's blessed by Srila Prabhupada. You're all blessed by Srila Prabhupada. तो हम सबके लिए खुशखबरी है कि हम सब श्री प्रभुपाद जी द्वारा स्पेशल हमें उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि हम इस मूवमेंट से जुड़े हैं. There's a story several years ago on Vyas Puja. We understand after Janmashtami, everyone's very tired, and there's lots and lots of Mahaprasadam sitting around from all the different offerings. तो प्रभु जी जो है एक कथा सुना रहे हैं कि जन्माष्टमी के बाद सब लोग जो है बहुत थक जाते हैं सेवाओं के बाद, और उसके अगले दिन ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता है और बहुत सारा प्रसाद जो है पड़ा रहता है साइड पे.
So one of my godbrothers came across one brahmachari with a big plate of Mahaprasadam the day after Janmashtami, which is Srila Prabhupada's Vyas Puja. तो प्रभु जी के गुरु भाई जो हैं वो एक ब्रह्मचारी के पास गए बड़े से प्लेट के साथ, जिसमें बहुत सारा महाप्रसाद था, And this devotee is having a big feast at 9 o'clock in the morning. और वो सुबह 9 बजे ही फीस्ट पा रहे हैं. So he asked him, Prabhu, today is Prabhupada's appearance day. We're supposed to be fasting till noon. Why are you taking prasadam at 9 o'clock in the morning? तो प्रभु जी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि प्रभु जी आज तो व्रत है, आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, आप प्रसाद क्यों पा रहे हो सुबह 9 बजे? So he said, oh, he's not my guru. He's your guru. तो उन्होंने आगे से बोला वो मेरे गुरु महाराज नहीं है, इसलिए मैं व्रत क्यों रखूं, आपके गुरु हैं, आप रखिए. Such ignorance, such ignorance. How did you come to Krishna consciousness? तो How, ये how, do, हमारा how do you have a guru? Only by Prabhupada's mercy. तो ये हमारा अज्ञान है कि प्रभुपाद हमारे गुरु नहीं है, क्योंकि हम इस्कॉन में कैसे आए? प्रभुपाद की कृपा से ही तो आए. Only by the sacrifice of Srila Prabhupada. सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया उसके कारण हम आए. I'm always surprised. I do some traveling to different venues, to different to IIT base groups and communities, and when I see devotees jumping and chanting Jai Prabhupada, I'm always very surprised. तो प्रभु जी बहुत प्रचार के लिए अलग अलग आईआईटीज में और अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, तो प्रभु जी जब देखते हैं कि जब कीर्तन में जय प्रभुपाद हो रहा होता है तो सब लोग बहुत ऊंचा ऊंचा उछलते हैं, तो प्रभु जी उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं. I was in Vrindavan one year on New Year's Eve with an IYF group, ISKCON Youth Forum group, about 60 young men. तो प्रभु जी एक बार वृंदावन में थे और इनके साथ 60 और यूथ लड़के थे इस्कॉन यूथ फोरम के. So I was singing Jai Radha Madhava, everyone's singing along. But when I started singing Jai Prabhupada, the room exploded with enthusiasm. I almost fell off my seat. तो प्रभु जी जय राधा माधव कीर्तन कर रहे थे, तो सब लोग भी जय राधा माधव कीर्तन कर रहे थे आराम से, लेकिन प्रभु जी ने जैसे ही जय श्री प्रभुपाद बोला तो सब लोग इतना उछलने लगे कि प्रभु जी ही अपने सीट से गिरने वाले थे. Where does that enthusiasm come? You never saw Prabhupada. You never saw him personally. Where does that come from? तो ये उत्साह कैसे आया? उन लोगों ने तो कभी प्रभुपाद को देखा भी नहीं. Actually, it's something like this in Srimad Bhagavatam. We read Tam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi, that Shukadev Goswami entered the hearts of all that read Bhagavatam. तो भागवतम में ऐसा वर्णन है कि शुकदेव गोस्वामी जो है सबके हृदय में प्रवेश किए. So it's something like that, how Srila Prabhupada enters the heart of all his followers and blesses them. तो उसी प्रकार से प्रभुपाद किस प्रकार से हम सबके हृदय में जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं. Same thing, sometimes in Vyas Puja, I listen to devotees puja offering and openly overcome with emotion and weeping. तो प्रभु जी जो है व्यास पूजा में अलग अलग भक्तों को ऑफरिंग जो है सुनते हैं, तो किस प्रकार से वो अपना अनुभव सबके साथ साझा करते हैं और रोने लगते हैं अपना अनुभव बताते बताते. So sometimes I hear devotees very sad that I missed Prabhupada. I didn't get to see Srila Prabhupada. तो कभी कभी प्रभु जी सुनते हैं कि भक्त जो है रोते रोते बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद को जो है बहुत मिस करता हूँ, मैंने उनका दर्शन नहीं किया. But we can have a relationship with Prabhupada by his Vani. तो हम अभी भी प्रभुपाद के साथ संबंध बना सकते हैं उनकी वाणी के माध्यम से. Srimad Bhagavatam says, Rahuganai tattapasana yati na chidya nirvapanad grihadva na chandasanaiva jalagnamurha vinamahat pada rajobhishekam, that one cannot become Krishna conscious unless he gets the dust from the lotus feet of a pure devotee. तो श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया है कि जब तक हम एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों से जो रज निकल रहा है उसमें हम स्नान नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते. So someone may ask, how will I get dust? Prabhupada's gone. How will I get the dust from his lotus feet? He's gone. तो कोई सोच सकता है कि अभी हमें प्रभुपाद के चरण कमलों का रज कैसे मिलेगा, वो तो चले गए. From the material point of view, Srila Prabhupada has left our vision. तो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रभुपाद हमारे बीच नहीं है. When he was here, we could sit in his class. We could go in morning walk with him. We could take prasadam. We could take his remnants. We could wash his clothes. We could cook for him. We could ask him questions. But all of that is gone now because bodily he's outside of our vision.
तो जब प्रभुपाद यहाँ थे तो सब लोग उनकी क्लास में बैठ सकते थे, उनके कपड़े धो सकते थे, उनका महाप्रसाद ले सकते थे, उनके साथ बैठ के प्रसाद पा सकते थे, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते थे। पर अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि में वो अभी नहीं है। But we get the same benefit equally to all devotees who take advantage of his Vani Seva. पर अभी भी हम उनका वाणी सेवा कर सकते हैं और उसका उतना ही लाभ है जो उनका वपु सेवा का था। There are heaps of Vani Seva dust available by serving Srila Prabhupada's mission, Chaitanya Mahaprabhu's mission. तो ढेरों ढेरों वाणी सेवा अभी उपलब्ध है, किस प्रकार से, इस मूवमेंट में मदद करके। Srila Prabhupada pointed out that Vapu Seva is temporary. Guru must also leave this world. This is the law of material nature. No one can check it. तो प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि जो वपु सेवा है वो कुछ अस्थाई है, एक दिन गुरु महाराज को भी जाना पड़ेगा, ये संसार का नियम है। But Vani Seva is an eternal principle because the soul is eternal. We're in eternal. Na jayate mriyate vaka. We don't die. We're not born. We don't die. We're eternal beings. Guru is also eternal being. And the relationship is eternal. That it is forged at the time of initiation. तो लेकिन वाणी सेवा जो है वो स्थायी है, वो हमेशा रहेगी। जैसे हम एक शाश्वत जीव हैं, उसी प्रकार से गुरु महाराज शाश्वत व्यक्तित्व हैं, वो कभी नहीं जाते इस जगत से। And that relationship with Srila Prabhupada is formed when we join his institution, ISKCON, and we begin to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. और हमारा संबंध प्रभुपाद से तब स्थापित होता है जब हम इस कौन में जुड़ते हैं और इस मिशन में कुछ योगदान देना शुरू करते हैं। So we should contemplate these things, what is our good fortune to have this eternal relationship with Srila Prabhupada. तो इस पे विचार करिए कि हमारा क्या संबंध है प्रभुपाद के साथ। And that is our wealth of life. यही हमारा असली धन है हमारे जीवन का। We read in Chaitanya that after wandering through millions of lifetimes and millions of situations in life, one who is very fortunate has a relationship with Guru. तो हम स्तन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि अनेक अनेक जन्मों में भ्रमण करने के बाद, अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद जो बहुत भाग्यशाली जीव है उसको गुरु के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। So ask yourself, who is Bhagyavan Jeev? Who is a fortunate soul? तो अपने आप से पूछिए भाग्यवान कौन है? Lakpati, Crorepati? लखपति, करोड़पति, कौन भाग्यवान है? Someone who has a big house, big car, prestige, social position, respect. जिसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत लोग उसका आदर करते हैं, वो भाग्यवान है। No, this is not good fortune. All of these things are temporary. They have their beginning and they have their end. वो व्यक्ति भाग्यवान नहीं है क्योंकि ये सभी चीजों का एक शुरुआत है, एक अंत है। They're actually impermanent, meaningless. तो ये सब एकदम बिना अर्थ के है। So consider how fortunate you are to have a relationship with Srila Prabhupada. तो सोचिए आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली, हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्रभुपाद जी के साथ संबंध है। And understand the scope of his preaching campaign, how the greatest things that he accomplished, inhuman, inconceivable accomplishments. और जरा विचार करिए कि प्रभुपाद ने जो प्रचार कार्य किया, क्या कोई साधारण मनुष्य कर सकता है इसको? हमारी बुद्धि के परे है। And think for a moment, if Prabhupada had not come, what would the world be like? He changed the course of human history. और सोचिए अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता इस संसार का? उन्होंने पूरा इतिहास ही बदल दिया है। If Srila Prabhupada had not come, there'd be no project in Puri, in Vrindavan, in Mayapur. तो आज वृंदावन मायापुर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब नहीं होते। And 850 ISKCON temples and preaching centers all over the world. None of that would exist. तो आज 850 से ज्यादा इस्कॉन केंद्र मंदिर हैं पूरे विश्व में, तो वो लोग नहीं, वो सब नहीं होता अगर प्रभुपाद नहीं होते। There'd be no international farm communities. तो कोई इंटरनेशनल फार्म कम्युनिटी नहीं होती। There'd be no initiations. There'd be no Prabhupada disciples giving initiation. ना तो कोई दीक्षा गुरु होता, ना ही जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जो आज दीक्षा दे रहे हैं, वो सभी नहीं होता, कुछ नहीं होता। All the devotees would have to take birth in another planet to find out where Chaitanya Mahaprabhu's mission is going on.
तो सभी जीवों को जो है किसी और प्लैनेट में जन्म लेना पड़ता, ये पता करने के लिए कि महाप्रभु किधर अपना सारा प्रचार कर रहे हैं। Tens of millions of people never would have heard the name Krishna, and tens of millions of people never would have taken prasadam. इतने इतने सारे लोग कभी भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, और इतने सारे लोग कभी प्रसाद ही नहीं पा पाते अगर प्रभुपाद नहीं होते। Some people would have starved without Prabhupada's mercy. अगर प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित नहीं किया होता, कुछ लोग तो भूखमरी से मर जाते। There'd be no deity worship in tens of thousands of devotee homes. और ना ही भगवान के अर्श विग्रह का सेवा होता, और ना ही भक्तों के घर होते। No Hare Krishna cinema, art, music, kirtan. आज हम जो हरे कृष्ण कीर्तन सुनते हैं, ये सब नहीं होता। No Govinda's restaurants. और ना ही गोविंदा रेस्टोरेंट होता जहां हम प्रसाद पाते हैं। And outside of India, no one would have access to Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, all these wonderful books that Srila Prabhupada made available. दिव्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब बाहर के देशों में कभी जाते ही नहीं। Srila Prabhupada's books have been translated into 85 different foreign languages. तो श्री प्रभुपाद की जो वो पुस्तकें हैं, उनको 85 दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। And 600 million pieces of literature have been distributed by his followers. और उनके शिष्य अनुगामियों ने 600 मिलियन लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। If Srila Prabhupada had not come, there'd be no Harinam Sankirtan or no Hare Krishna festivals. तो कोई हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण फेस्टिवल नहीं होता अगर प्रभुपाद नहीं होते। No Rath Yatra. और रथ यात्रा भी नहीं होती। And the amazing children that are taking birth in our families would have to be born in some other universe where Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan mission is going on. तो आज हम देखते छोटे छोटे बच्चे भक्त परिवारों में जन्म लेते हैं, तो वो यहाँ जन्म नहीं लेते, वो कहीं और किसी और प्लैनेट में जन्म लेते हैं जहाँ महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन फैला रहे हैं। All the amazing devotee authors that write, prolific authors, would be writing about some other topic. तो आज जो कितने सारे भक्त अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख रहे हैं भक्ति के बारे में, वो किसी और विषय पे लिखते। So contemplate these things, the scope of Srila Prabhupada's contribution to human society. तो सोचिए प्रभुपाद का कितना बड़ा योगदान है इस पूरे मूवमेंट को चलाने में। And consider your good fortune to be connected with Srila Prabhupada. और अपना सौभाग्य, उसके बारे में विचार करिए कि आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप इस मूवमेंट से जुड़े हैं। So what is it exactly that Srila Prabhupada came to give? तो प्रभुपाद क्यों आए, वो क्या देना चाहते थे हमको? Just some liberation, some moksha, क्या हमें मुक्त करने आए थे? sattva gun life, good food, nice people, happy life. क्या हमें सत्वगुणी बनाने आए थे, अच्छे लोगों का संग देना, अच्छा खाना खाना? Srila Prabhupada came to give entrance into Goloka Vrindavan and worship of Radha Krishna. वो हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज देने आए थे, गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा। There is a class of person who criticizes our ISKCON society and say, in ISKCON, they're simply practicing Vaidhi Bhakti, and therefore they can only hope to go to Vaikuntha. तो कुछ अलग संप्रदाय है, वो हमारा निंदा करती है कि इस्कॉन में केवल वैदिक भक्ति सिखाई जाती है और ये लोग केवल वैकुंठ तक जा पाएंगे। Or maybe they can go to Dwarka, become the son of the Lord, to become one of his Mahishis. या फिर हो सकता है द्वारका धाम तक पहुंच जाए। But if we examine the things that Srila Prabhupada introduced, we can understand that he gave us the key to the doorway of entering Goloka Vrindavan and worship of Radha Krishna. लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सोचे तो प्रभुपाद ने हमें एक ऐसी चाबी दी है जो गोलोक वृंदावन की है, जिससे हम श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। We're chanting Hare Krishna, not Om Namo Bhagavate Vasudeva, Om Namo Narayanaya. We're chanting Hare Krishna Mahamantra, Radha Krishna Mantra. तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ये सब चैंट नहीं कर रहे, हम क्या जप कर रहे हैं? हरे कृष्ण, साक्षात राधा कृष्ण का मंत्र जप कर रहे हैं। We're chanting Jai Radha Madhav, Kunja Bihari. तो हम जय राधा माधव कुंज बिहारी का कीर्तन करते हैं। Yashomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana. Chanting the most intimate names of the Lord. भगवान के जो एकदम बहुत ही गुह्यतम नाम है, उनका जब कीर्तन कर रहे हैं। Where the residents of Goloka love the Lord with all their heart. They don't care whether Krishna is God or he's not God. They simply are lovers of the Lord, overwhelmed with divine love.
तो जो गोकुल के निवासी हैं वो ये नहीं देखते भगवान भगवान है, वो केवल कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण बस उनसे प्रेम करना चाहते हैं। He gave second initiated devotees Gayatri mantra, calm Gayatri. तो प्रभुपाद ने जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनको काम गायत्री दिया। So these are not, this is outside of the scope of Vaidhi Bhakti. This is the fruit of Vaidhi Bhakti. तो काम गायत्री जो है वैदिक भक्ति में नहीं आती है, ये वैदिक भक्ति का फल है। But Srila Prabhupada gave complete formula for success. प्रभुपाद ने हमें पूरा एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे केवल एक ही चीज हमें हासिल हो सकती है, वो है सफलता। Association of devotees, Hare Krishna mantra, Radha Krishna Murti, Mandir, Bhagavatam, Gita. He gave everything, prasadam, complete formula for success to enter Goloka Vrindavan and never come back. Yad gatvana nivartante tadama paramam mama. Go there and never come back to this material world. तो प्रभुपाद ने हमें एक पूरा फॉर्मूला दिया जिसमें भगवत धाम जाना एकदम निश्चित है। भक्तों का संग, हरि नाम संकीर्तन, भागवतम, मंदिर, ये सब उन्होंने हमें दिया। इसका एक ही रिजल्ट निकलेगा, हम गोलोक जाएंगे। So if someone says, oh, the ISKCON people, they're just chanting, they're just practicing Vaidhi Bhakti, they can only go to Vaikuntha, they are mistaken. जो लोग बोलते हैं इस्कॉन के भक्त केवल वैकुंठ तक जा पाएंगे क्योंकि वो वैदिक भक्ति करते हैं, तो वो लोग गलत हैं। I mean, examine our Mangalarti, our morning program. आप केवल हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम को ध्यान दीजिए। For devotees that are able to participate in morning program, examine what are we doing. तो जो भक्त मंगल आरती का पूरा कार्यक्रम अटेंड करते हैं, आप सोचिए आप उसमें क्या क्या करते हैं। We're meditating on Sri Guru, Radha Krishna, who's Sri Radhika Madhava Yorapara Madhurya Lila Guna Rupa Namnam. He's absorbed in the names and forms and activities of Radha Krishna. तो हम उन श्री गुरु पे चिंतन करते हैं जो राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं में एकदम से डूबे हुए हैं, उन गुरु का ऊपर ध्यान करते हैं। We're meditating on Srila Prabhupada Nikunjayono Ratikeli Siddhya Yayalibhya Yuktir Apekshana, who's making tasteful arrangements for the service of Radha Krishna and the Nikunjas of Vrindavan. तो आप गुरुवाष्टकम का छठा श्लोक जो प्रभु जी बोले उसमें आप देख सकते हैं गुरु क्या कर रहे हैं, सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, राधा कृष्ण की नित्य गुह्यतम लीलाओं के लिए सारा प्रबंध कर रहे हैं। We're worshipping Tulsi Devi, as I was previously describing. हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, जैसे प्रभु जी ने पहले स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के। Praying for Radha Krishna Seva. और हम उनसे क्या मांगते हैं, राधा कृष्ण की सेवा। So this is a complete program to enter Goloka. तो यही तो कंप्लीट कार्यक्रम है जिससे हम गोलोक जा सकते हैं। Technically, Srila Jiva Goswami describes. तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, This is Ajata Ruchi Ragunuga Sadhana. Ajata Ruchi Ragunuga Sadhana. That means that our Ruchi, our love of God, has not fully blossomed. It's Ajata Ruchi, it's not born. अजात रुचि मतलब हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए अभी पूरी तरह से पैदा नहीं हुआ, पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ। But we've taken up the process that will guarantee in due course of time, we'll develop raga, love for God, simply by following this process. लेकिन जो पूरा ये प्रोसेस है ये इतना शक्तिशाली है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमें प्रेम प्राप्त होगा। So this is our good fortune to be associated with such a great soul as Srila Prabhupada, eternal associate of the Lord. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी के संबंध में हैं। Srila Prabhupada was also the most successful amongst all his god brothers. और प्रभुपाद जी के जितने भी गुरु भाई हैं उनमें से सबसे सक्सेसफुल कौन है, प्रभुपाद। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur, their heart desire, their most cherished desire, was that Krishna consciousness would be distributed everywhere. तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो सभी चाहते थे कि जो कृष्ण भावनामृत है वो बाहर के देशों में भी प्रचार प्रसार हो उसका। That book distribution would go on, that Mayapur Vrindavan would be developed, that temples would be built. तो वो लोग चाहते थे कि मायापुर वृंदावन इन सब का जो है डेवलपमेंट हो, पुस्तकों का वितरण हो, मंदिर बने। Who has done that? तो किसने किया ये सब? I mean, there's other institutions. We respect all Vaishnavas. हम सभी वैष्णवों का आदर करते हैं। We worship all Vaishnavas. We'll happily bathe their feet and drink their water. We're servants of all Vaishnavas. हम सभी वैष्णवों के दास हैं, हम उनके चरण रज को उसको सम्मान करते हैं। But comparatively speaking,
Who has even come close to achieving what Srila Prabhupada achieved by the mercy of his Guru Maharaj? लेकिन आप तुलना कीजिए जो प्रभुपाद ने किया है वो और किसने किया है? Here in West Bengal, there's 1 million Namhata devotees. तो बंगाल में 1 मिलियन नामहट्ट भक्त हैं. Imagine 1 million Namhata devotees. सोचिए इस पे. I live right next to the Namhata building. And practically every night there's a huge program, thousands of devotees shouting, Sharira Bijajal Jotindiyatayaka. तो प्रभु जी जो है नामहट्ट बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में रहते हैं, तो प्रभु जी को ऐसी आवाजें आती रहती, कई कई भक्त जो हैं कीर्तन करते रहते हैं और महाप्रसाद गोविंद का प्रार्थना बोलते रहते हैं. Or big initiations going on, Swaha, Swaha, devotees shouting. और बहुत सारी दीक्षा कार्यक्रम होते रहते हैं. Mayapur every day, especially this time of year, festival season, Kartik, 20,000-30,000 people are here every day for darshan. तो मायापुर में प्रभु जी बता रहे हैं कि 20 से 30 हजार लोग भक्त जो है हर रोज आते रहते हैं दर्शन के लिए. And on festival days, Gaur Purnima, Janmashtami, 1 lakh of people coming. And we're not even open the big temple yet. तो अभी तो मायापुर में बड़ा मंदिर बना ही नहीं है, फिर भी 1 लाख भक्त आते हैं जब कोई विशेष उत्सव होता है. So Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, they wanted Mayapur developed. तो भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तन सरस्वती ठाकुर वो चाहते थे मायापुर का हम उसको डेवलप करें. Today there's 7,500 devotees living in Mayapur. और अभी मायापुर में 7,500 भक्त रह रहे हैं. And Prabhupada predicted there will be 50,000 devotees living in Mayapur, ISKCON Mayapur. लेकिन प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि 50,000 भक्त जो है मायापुर में रहेंगे. The first time I came to Mayapur was in 1976. तो प्रभु जी पहली बार 1976 में मायापुर धाम में आए. And there was just the Lotus building, and the long building was under construction. तो उस समय केवल लोटस बिल्डिंग था और जो मेन बिल्डिंग था वो भी कंस्ट्रक्शन में हो रहा था, निर्माण हो रहा था उसका. And there was nothing between ISKCON Chandrodaya Mandir and the Yoga Pit. और योगपीठ और चंद्रोदय मंदिर के बीच में कुछ भी नहीं था उस समय. Now you look out there, if I go to the top of my building, all I see is construction and devotees everywhere. तो प्रभु जी अगर अपनी छत पे जाते हैं तो वो देखते हैं हर समय हर जगह बस कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह निर्माण कार्य हो रहा है. So our acharyas wanted this to happen, and who has fulfilled their desire? Srila Prabhupada. तो हमारे आचार्य चाहते थे कि मायापुर का निर्माण हो, और किसने किया ये? प्रभुपाद ने. They wanted Navadip Dham Parikrama. वो चाहते थे नवदीप धाम परिक्रमा हो. There's a nice Navadip Dham Parikrama that goes on during Kartik, but during Gaur Purnima, 4,000, 5,000 devotees are out on Navadip Dham Parikrama. तो गौर पूर्णिमा उत्सव के समय पे 4,000 से 5,000 लोग जो है नवदीप परिक्रमा करते हैं. They have to divide all the groups up. There's a Hindi group, there's an English group, there's a Russian group, there's a Chinese group. They have to divide everybody up because there's so many devotees going out on Navadip Dham Parikrama that our acharyas wanted to happen. इतने सारे भक्त आते हैं कि उनको डिवाइड करना पड़ता है कि ये चाइनीज ग्रुप है, ये हिंदी ग्रुप है, ये इंग्लिश ग्रुप है, क्योंकि इतने सारे भक्त आते हैं. ये हमारे आचार्य चाहते थे. They wanted temples. वो चाहते थे मंदिर बने. Just look what's happening in yours. You're mostly from Delhi, I think. प्रभु जी राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया. यस. Okay. We just opened a beautiful temple in Ludhiana. A temple will open in Kurukshetra. Kargar is opening a temple. Rohini just opened. Dwarka is going to open. There's 18 temples just in Delhi alone. हम अगर देखें प्रभु जी बता रहे हैं अभी लुधियाना में नया मंदिर बना, खारगार, कुरुक्षेत्र सब में नया मंदिर बना, और दिल्ली में अकेले 18 से अधिक मंदिर हैं. How did this happen? तो ये कैसे हुआ? Only by the inspiration and blessing of Srila Prabhupada. केवल प्रभुपाद जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से. And the amazing hard work of his disciples and followers. और उनके अनुयायी और उनके शिष्यों का हार्ड वर्क. So we should think over these things and not just take Srila Prabhupada for granted. तो हमें प्रभुपाद को साधारण नहीं समझना चाहिए. And associate with Prabhupada by serving in his institution. और हमें प्रभुपाद का सेवा करना चाहिए इस मिशन की सेवा करके. This Vani Seva is very, very important. तो वाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है. I want to read one quote that I found in Srimad Bhagavatam, 4th canto. तो प्रभु जी एक कोट पढ़ेंगे भागवतम से. Srila Prabhupada wrote, when one becomes serious to follow the mission of the spiritual master, तो जब प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है बहुत
गंभीरता से गुरु की आज्ञा का पालन करता है, his resolution is the same as seeing the Supreme Personality of Godhead. तो ये उसी प्रकार से है कि भगवान को साक्षात देखना। As explained before, this means meeting the Supreme Personality of Godhead. तो ऐसा है कि हम भगवान को साक्षात उनका संग कर रहे हैं, And the instruction of the spiritual master. और किसके बराबर है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। This is technically called Vani Seva. इसको बोलते हैं वाणी सेवा। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur states in his Bhagavad Gita commentary, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी भगवद गीता की कमेंट्री में बोलते हैं, on the verse Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana, that one should serve the words of the spiritual master. तो वो बोलते हैं कि अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को कैसे पालन करना चाहिए। The disciple must stick to whatever the spiritual master orders. तो जो गुरु बोल रहे हैं उस पे उसका पालन करना। Simply by following on that line, one sees the Supreme Personality of Godhead. अगर कोई ऐसा कर पाता है तो भगवान को साक्षात देख पाएगा। So this is the power of following Srila Prabhupada. तो ये शक्ति है प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने की। By being the best devotee you can be and following as best you can. तो आप अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं? जितना अच्छे से आप आज्ञा पालन करेंगे। Srila Prabhupada is saying here that doing so will bring you Sakshat Darshan, seeing Krishna eye to eye and face to face. और अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो आप कृष्ण को आमने सामने देख सकते हैं। And at the end of life, Tattva deham punarjanma, we go back to Godhead and never again come back to this material world. और इस जीवन के अंत में क्या होगा? हम भगवान के धाम आएंगे और जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। So this is actually there's a whole seminar about Srila Prabhupada, so we've spoken some things. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि पूरा सेमिनार है प्रभुपाद जी की व्यक्तित्व पे, लेकिन प्रभु जी ने कुछ बताया उसमें से। So trying to completely glorify Prabhupada in this course of an hour is impossible. प्रभुपाद का गुणगान केवल 1 घंटे में करना असंभव है। It's something like trying to fit all the oceans of the world, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Ocean, Indian Ocean, Red Sea, Caspian Sea, all placing it in 1 liter bottle. तो सारे महासागर जो हैं विश्व के, उनको एक छोटी सी बॉटल में डालना, ऐसा है प्रभुपाद का गुणगान 1 घंटे में करना। So I hope the few things I said about Srila Prabhupada today encouraged you in your own spiritual life. तो प्रभु जी आशा करते हैं कि जो भी उन्होंने बताया श्री प्रभुपाद जी के गुणगान में, वो आपको आपकी भक्ति में प्रोत्साहित करेगा। Does anyone have any comment or question? तो अब प्रभु जी चाहते हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है जो आप प्रभु जी से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट कर पाएं। ओके, तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है, Yeah. एक माता जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं कि आई विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी प्रभु जी। So she has a question that, as you mentioned, if we follow the instructions of Srila Prabhupada, then our life will become successful. But how do we determine in following the instructions? How to be determined that I have to follow instructions? I understand. If we understand our situation in this world, we become very enthusiastic and determined. तो हम कैसे डिटरमाइन बन सकते हैं? अगर हम ये सोच लें, हमारी स्थिति जान लें इस भौतिक जगत में, तो हम कभी भी ढीले नहीं पड़ेंगे। Because life is very fleeting. Kamala dala jala jivana talamala bhajahu harivara nitire. That our life is like the drop of water on the lotus pad. तो हमारा जीवन बहुत छोटा है, कमल के दल पे जैसे एक पानी की बूंद है उतना And it can be over at any moment. और किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। Is that true? क्या ये सच है? We're thinking, oh, I'll live 80, 100 years. You may live 80 minutes, 80 seconds. हम सोचते हैं हम 80-100 साल जिएंगे, हो सकता है आप 80 मिनट भी ना जियो, 80 सेकंड भी ना जियो। There's an urgency to take advantage of the opportunity to become Krishna conscious, leave this world and go back to Godhead. तो इसीलिए गंभीर बनिए और भगवत धाम जाइए। And it should be understood very carefully. इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। Therefore, we speak of Tattva, of the truths of Shastra. What is true, what is absolutely applicable in our life. इसीलिए हम तत्व की चर्चा करते हैं कि असली में सत्य क्या है, उसको कैसे हम अपने जीवन में लागू करें। So the fact that we can't stay here, that life is temporary, isn't a religious idea, it is a fact of life. तो हम सोचते हैं हम यहाँ रहेंगे, ये संभव नहीं है।
It's not a philosophical precept, it is a fact of life that we're mortal. We have to leave this world, we can't stay. So how to stop it? There is a system to stop it, and we should have faith in that. तो ये सर सिर्फ बातें नहीं है कि हम यहाँ पे रह नहीं सकते, असली में हम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हमें मरना है एक दिन। We should make plans how in this lifetime I will go back to Godhead. तो इसलिए ये प्लान बनाओ कैसे इस जन्म में भगवत धाम जाएंगे। Now, this isn't an easy thing. ये इतना आसान नहीं है। From one point of view, Krishna Bhakti is so easy. तो एक नजरिए से कृष्ण भक्ति बहुत आसान है। Chanting Hare Krishna is so easy. You chant, you make some noise with your mouth, you let the sound come to your ear, you move the bead. So easy process. ये देखने में कितना आसान है, बस कुछ आवाज निकालनी है मुंह से और सुनना है। But what is our problem? तो प्रॉब्लम क्या है फिर? Our problem is our mind. हमारे प्रॉब्लम है हमारा मन। Manoratena sato dhavato bihi. Our mind is, we're being carried by the chariot of our own mind that wants to suggest many other things besides being Krishna conscious. तो हमारा मन जो है एक रथ पे बैठ जाता है और भक्ति के अलावा सब कुछ सोचता है। So we're sadhakas. That means we haven't reached the perfect platform, that we're distracted by many things. तो हम बहुत सारी चीजों से जो है विचलित हो जाते हैं We have many other desires besides serving Krishna. क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त। So a devotee should be a little patient with himself, but never lose the determination to chant Krishna's name. तो आप सब लोग जो है थोड़ा धैर्य रखिए और अपना डिटर्मिनेशन छोड़िए मत भक्ति को लेकर। We should be like Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर जैसा बनना है हमको। He was arrested and brought before the Muslim magistrate who told him, "You were born, you got such a good birth as a Muslim. What is this nonsense Hindu mantra you're chanting?" तो उनको अरेस्ट करके जो है मुस्लिम के पास लाया गया और मुस्लिम ने उसको बहुत डांटा कि तुम बेवकूफ हो, कितने ये मंत्र क्यों जप कर रहे हो, तुम्हारा मुस्लिम खानदान में जन्म हुआ है। And he threatened him, "If you don't stop this chanting, we'll kill you." अगर तुम ये हरे कृष्ण बंद नहीं करोगे तो हम मार देंगे तुमको। Haridas Thakur said, "Cut my body to millions of pieces, but I will not stop chanting Hare Krishna ever." पर हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया, तुम मेरी बॉडी को, तुम मेरे शरीर को खंड खंड कर दो पर मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। So we should have that determination. तो ये है डिटर्मिनेशन, ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए हमको। That whatever happens, whatever disaster comes, whatever blessing comes, whatever my life is, I'll never stop chanting Hare Krishna Mahamantra and serving Chaitanya Mahaprabhu. ये डिटर्मिनेशन लाओ, कुछ भी हो जाए मैं जप करना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं महाप्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। I hope that answers your question. ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक शी इज यस ओके। आरती माता जी, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances. My basis is to you, Mataji. Prabhuji, my question is, how can we cultivate a strong sense of detachment from this material world and apply Krishna consciousness practically in our life? Ultimately, I don't mean to sound mundane, but ultimately, we simply have to chant Hare Krishna. Because, go ahead and translate. तो माता जी पूछ रही हम कैसे जो है इस बात पे गंभीर बने कि हमें इस जगत से डिटैच होना है, इससे नाता तोड़ना है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप, यही एक सोल्यूशन है। Because as we continue to chant, something very wonderful happens. कि जब हम जप करते हैं बहुत ही कुछ वंडरफुल होता है हमारे जीवन में। We automatically develop detachment and knowledge. हम अपने आप निरासक्त हो जाएंगे। Bhagavatam says, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayatyashu Vairagyam Jnanam Chayada Haitukam. By serving the Lord, we automatically develop knowledge and detachment. We get realization. तो अगर हम जप करते हैं और भक्ति करते हैं, अपने आप हमारे अंदर वैराग्य आएगा। When we're young devotees, we hear the philosophy and we think, oh, that makes sense, but we haven't experienced it. जब नए भक्त होते हैं तो हम फिलॉसफी सुनते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अभी इसका साक्षात्कार नहीं। Devotees tell us, you are not your body. I say, okay, that makes sense. How can I be this lump of bones and skin and fat and hair? How can that be me? तो जब हम सुनते हैं, भक्त हमें बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते। We accept it on principle. We accept it because it makes sense. But do we experience detachment from the body? That only comes with experience and realization. हम केवल सुनते हैं, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए हमें लगेगा। So Shastra tells us, Ataksha Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai.
Sevanmukhi hijevada swayameva sparatyada. That we can't understand spiritual truth with our material senses. तो हम जो साक्षात भगवान है और सत्य है उसको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। For the materialist, the deity seems like a statue, a piece of stone. और जो भौतिकतावादी है उनको लगता है भगवान क्या है, मूर्ति पत्थर की। And Ganga, what is Ganga? Oh, H2O. और वो सोचते हैं गंगा महारानी क्या है, H2O। What is Guru? Oh, he is a man. और गुरु को क्या समझते हैं, साधारण मनुष्य। What is Bhagavatam? Oh, it is paper and ink. और भागवतम को पेपर और इंक, कागज और कलम। This is the perception of a person who has no spurti, no realization, because hasn't surpassed the material conception of life. तो कौन सोचता है ऐसा, जो अभी भौतिकता से ऊपर नहीं उठा। So how does it come? How does that realization come? Namado. It comes from chanting the holy name. We get realization. We get spurti, revelation. और हमें अनुभव कैसे होगा, भगवान के नाम जप से। But can you snap your fingers for that? तो ऐसे केवल इतनी चुटकी भर में नहीं होगा। I'll be self-realized. Okay, now I'll be done. No more lust, no more greed, no more envy, no more fear. All my problems are over. I'm chanting Hare Krishna. It's done. It's a process, Mataji. केवल चुटकी बजाने से इतने जल्दी नहीं होगा परिवर्तन, समय लगेगा। It's not a light switch. Now it's dark. I hit the switch. Now it's light. तो जैसे लाइट का स्विच होता है, हम बस बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। इतना इजीली हमें अनुभव नहीं होगा भक्ति में। Yesterday I was in Maya and today Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. So easy? No, it's not so easy. तो कल हम माया में थे, आज निताई को और हरि बोल बोलेंगे तो भक्त बन जाएंगे, इतना आसान नहीं है। Our realization is not a light switch. It is like the sunrise. तो जैसे सूर्य उदय होता है वैसे रियलाइजेशन होता है। Self-realization happens like the sunrise. It's pure darkness. You can't see anything in front of your face. But as the sun begins to rise, finally we can see form. Then we can see form and color. Then as the sun rises in the sky, we see everything. But it doesn't happen immediately. तो जैसे सूर्य उदय होता है उसमें समय लगता है, पहले हमें थोड़ा थोड़ा उजाला दिखता है, फिर धीरे धीरे रूप दिखता है, फिर एकदम से सब कुछ उजाला हो जाता है, तो समय लगेगा। So what's required? तो क्या आवश्यकता है? Srila Rupa Goswami says, Utsahan nischayat dharyat. Be enthusiastic, be confident, and be patient. तो हमें उत्साह भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। But I can also add to that, be grateful that you've taken up this process. You're a great soul. Anyone who's taken up this process of chanting Hare Krishna is a great, fortunate soul. और प्रभु जी का ये अनुभव है कि हम सबको बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए खुद को कि हम इस प्रोसेस से जुड़े हैं। So I offer my obeisances to all the chanters of the holy name. प्रभु जी सभी उन भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। Because you're all great souls. And more than that, you're the future of my Guru's movement. I offer my Ananta Koti Shastanga Dandavat Pranam to each and every one of you. और प्रभु जी सभी को प्रणाम करें क्योंकि उनके गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी के आप सब लोग अनुयायी हैं जो इस प्रचार प्रसार में आगे योगदान देंगे। Is that helpful, Mataji? You can unmute, Madhu. Thank you for a nice question. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. प्रभु जी आपको Or Kuch? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Please- Krishna, Prabhu. Such Please- effulgent brahmachari. Thank you, Prabhuji, for your wonderful class. We are feeling very motivated to establish our personal connection with Prabhupada and to spread this mission more enthusiastically. Prabhuji, my question is very basic for myself also, for the devotees also. That Prabhupada's one quote is there that if you chant 16 rounds and follow 4 regulative principles, I will take you back to Godhead. So sometimes we say in our lectures and something, so some devotees questions, okay, these are 16 aparad, offensive rounds or pure name. What exactly, how to understand? Is it 16 rounds, 4 principles are enough whole life? Or devotees also say that you have to be very much sincere. You cannot be, you have to do these things also, these things also. So what exactly is that, how to understand this? Prabhupada says the 16 rounds and 4 regulative principles. Is that Prabhupada is talking about pure names or nama bhasa or nam aparad or offensive? Like how to understand this statement?
This is a very important topic that you brought up, and it's a big discussion, but briefly I can say something. Actually, the question should be translated also, Mataji. Yes, yes, प्रभु जी। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि प्रभुपाद का ऐसा स्टेटमेंट है कि 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो कौन सी माला जप करनी है? 16 अपराध वाली नाम जप करना है, नामाभास वाला, या शुद्ध नाम? तो प्रभु जी बोल रहे हैं ये बहुत ही विस्तारित उत्तर है, लेकिन प्रभु जी इसका आंसर देंगे। The answer to this question is that Krishna accepts our sincerity. तो इसका उत्तर है कृष्णा हमारा सिंसेरिटी देखते हैं। Someone may be chanting very enthusiastic, loudly shouting and with enthusiasm, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. He may not even be thinking of Krishna at all. तो हो सकता है कोई बहुत चीख चीख के जप कर रहा हो हरे कृष्ण, लेकिन हो सकता है भगवान के बारे में सोचे भी ना। He may be following the principles, the Charniyam, 4 regulative principles, out of fear of being criticized by his peers. तो हो सकता है कोई 4 नियम इसलिए पालन कर रहा हो ताकि उसके जो बाकी भक्त हैं साथ वाले वो उसकी निंदा ना करें। This is niyamagraha. ये नियम आग्रह है। He's following, but for what purpose? तो पालन तो कर रहा है, लेकिन क्यों पालन कर रहा है? We may confuse and we say pull the wool over someone else's eyes. We may hide our imperfection to each other, but you can't hide anything from Krishna. तो हम हो सकता है इसलिए पालन कर रहे हो ताकि अपनी कमियों को दूसरों से छुपा सके, लेकिन हम कृष्ण से कुछ नहीं छुपा सकते। Krishna knows your every breath, your every heartbeat, your every thought. कृष्ण आपकी हर एक सांस, आपकी हर एक हार्टबीट, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। And it's up to him whether you go back to Godhead or not. तो ये कृष्ण पे निर्भर करता है आपको भगवत धाम लेके जाएंगे कि नहीं। There is a story of one young devotee from Italy, young man, Italian devotee. तो प्रभु जी एक कथा बता रहे हैं, इटली के एक भक्त थे। He had a very profound dream where Srimati Radharani was calling him to Vrindavan. तो उनको एक सपना आया कि श्रीमती राधा रानी उन्हें वृंदावन बुला रही है। Now, mostly our dreams are all nonsense, a combination of the impressions we get during the day. और हम ऐसा सुनते हैं कि सपने जो हैं बेकार की बात है, वो दिन में हम जो सोचते हैं वही सपनों में आता है। But this was such a powerful spiritual dream. This devotee quit his job. He was not even initiated devotee. He left everything and came to Vrindavan. लेकिन वो इतना प्रोत्साहित हो गए उस सपने से, उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया, उनका दीक्षा भी नहीं हुआ था, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। A few days later, he got some disease. I think, not cholera. What's this other one? Anyway, he got some deadly disease and left his body in Vrindavan. और फिर थोड़े दिनों के बाद उनको बहुत ही भयानक रोग हो गया और उन्होंने वृंदावन में अपना शरीर छोड़ दिया। So what is the point? He wasn't initiated. Who knows what standard of sadhana he was following? But Radharani is calling him back to Vrindavan. She's calling him back home, back to Godhead. तो हम देख सकते हैं उनकी तो दीक्षा भी नहीं हुई थी, हमें नहीं पता उनकी साधना किस स्तर की थी, लेकिन श्रीमती राधा रानी स्वयं उन्हें वृंदावन बुला रही है और उन्होंने वहां पे शरीर छोड़ा। So we should understand our progress in spiritual life is not mechanical at all. तो हम सोचना चाहिए हमें कि हमारी भक्ति में प्रगति सिर्फ मैकेनिकल नहीं है। Rather, we're simply beggars. We're begging mercy. We're trying to attract the mercy of the Lord to accept us as his servant. हम भिखारी हैं, हम भगवान से भीख मांग रहे हैं, हम पे कृपा करिए। And if we don't have that mood, we haven't understood. और अगर हमारी ऐसी भावना नहीं है तो अभी तक हम भक्ति को समझे नहीं है। Our japa is a prayer. We're begging mercy to please be accepted. Lakshmi sahasra satasam brahma sebhyamanam govindamadi purusham. Krishna doesn't need our service. He doesn't need our patram pushpam phalam, dupam deepam naivedyam. What does he need from us? He doesn't need anything from us. He wants our bhakti. He wants our love. कृष्ण को हमसे कुछ नहीं चाहिए। सहस्त्र लक्ष्मियां जो है उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है, उनको भी सेवा का अवसर नहीं मिल रहा, तो वो हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। So this should be the overriding principle in our sadhana bhakti, that we're begging to be accepted, to be engaged in service with love, to develop a feeling, a relationship with God. तो साधना से भी महत्वपूर्ण है ये भावना कि हम भगवान से भीख मांगे कि मुझे आपको प्रेम करना, प्रेममय सेवा में लगाइए मुझे। And don't think that I've chanted 16 rounds and I'm following principles and I read some paragraphs, that now I'm done. तो ऐसा मत सोचिए कि हम 16 माला कर ली, 4 नियम पालन कर लिए, कुछ आपने पैराग्राफ पढ़ लिए गीता में से तो बस हो गया। Okay, you did your sadhana 3 hours a day, 4 hours a day, now I'm done.
तो आपने 3-4 घंटा साधना कर लिया, हो गया। Where is your mind 20 hours a day? Krishna says, Manmana bhava madbhakto, you always think of me. लेकिन Satat, बाकी के 20 घंटे क्या, आपका मन कहाँ है उस समय? Satatam kirtayanto mam, always chant about me. कृष्ण बोलते हैं हर समय मेरा चिंतन करिए, Always remember me, never forget me. हमेशा मुझे याद करिए, कभी भूलिए मत। So this feeling will arise in our heart by practice. तो ये कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे। But if it's not there, understand that you have a long ways to go. और अगर अभी तक ऐसा नहीं है, मतलब अभी बहुत दूर है हमारा लक्ष्य। Krishna can take you back today if he wants to take you back. He's the transcendental autocrat. He does whatever he wants, whenever he wants, with whomever he wants. कृष्ण इतने शक्तिशाली और इतने स्वतंत्र हैं, अभी आपको भगवत धाम ले जाएंगे। Does that answer your question, Prabhu? I hope. Yes, yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. One more question arises from this. So, as Prabhuji, for the benefit of myself and all devotees, what should be goal of our life as a sadhaka? What goal should we keep in this life? Practical means some devotees say that our goal is, this, and some devotees say this. According to our level, what goal should we keep for this lifetime? Some devotees say like you goal should be go back to Godhead. Some devotees say no, our goal is to simply serve Krishna out of love. And some devotees say our goal is to please Guru and Guru Parampara. And that is, We and sing, some devotees say that Shraddha level. we So sing what should every, be? we sing every morning. Actually, translate the question, Mataji, please. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं हम सभी भक्तों और सबके लिए, बेनिफिट के लिए, कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए साधक जीवन में। जी, जी। We sing every morning, Shri Guru Charane Rati E Se Uttamagati. What does it mean? तो हम हर रोज सुबह गाते हैं श्री गुरु चरण रहती यही से उत्तम गति, इसका अर्थ क्या है बताइए प्रभु जी आप। Means we should be serving our Guru Maharaj, our spiritual master. We should develop our faith, and our service attitude towards our Guru Maharaj should increase day by day. We should develop love. Rati means love. तो हमें उनके चरणों के प्रति प्रेम विकसित करना है। Shri Guru, love for the lotus feet of our spiritual master. We should develop loving relationship. Everything comes from that. Without relationship, who are we to approach Krishna? We're nothing. Our relationship with our Guru is as good as our relationship with Krishna. तो हम कौन है जो कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे? सीधा हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने गुरु महाराज के साथ प्रेम विकसित करें। And that is also a process that has developed over time. और इसको करने में समय लगेगा। Love is not so cheap. It's developed over time by sacrifice, by selflessness, by determination. प्रेम इतना सस्ता नहीं है, उसको विकसित करने के लिए समय लगता है और उसके लिए बहुत धैर्य रखना है। And our relationship with our Guru is as good as our relationship with Krishna. और जितना अच्छा हमारा गुरु महाराज के साथ संबंध है, इसका मतलब उतना ही अच्छा कृष्ण के साथ संबंध। Therefore, Shastra says, Tad Viganartam Sagurum Eva Begachet. That it's obligatory to have Guru, to surrender to Guru. Tad Viti Pranipatina, to surrender to Guru, to serve him, to inquire from him. These are not negotiable. These are obligatory. तो जो 3 चीजें हैं वो बहुत ही अति आवश्यक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। गुरु महाराज को उनको शरणागत होना, उनसे प्रश्न पूछना, उनकी सेवा करना। ठीक है। Thank you, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. We are feeling very blessed to have your association, and we want in future also that these types of sessions can be arranged. Dasosmi. Dasosmi. Prabhuji, Other questions? Yes, Prabhuji, if you have time, can we take? Yes. Okay. So Prabhuji, in chat, there are 3 questions which are just very similar. So first I will take that. So 3 devotees are asking that how can we develop relation? How can we please Prabhupada? They also feel that Prabhupada is helping them and they also want to serve him, but they're asking how can we really please him and feel more connected towards him? This is famous question. Devotees would ask Srila Prabhupada frequently. Srila Prabhupada,
Mostly they're book distributors, and they want Prabhupada to say, "You'll please me the most by distributing books," and they'll go, "Hari bol, Hari bol." It's not what Prabhupada said. तो प्रभु जी बोल रहे हैं ये प्रश्न जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, तभी 3 भक्तों ने ऑलरेडी पूछ लिया है। सभी लोग जो है प्रभुपाद से पूछते थे हम आपको कैसे प्रसन्न करें, और स्पेशली जो पुस्तक वितरण करते थे वो प्रभुपाद से बार बार पूछते थे, क्योंकि वो चाहते थे प्रभुपाद उत्तर दें, हाँ तुम पुस्तक वितरण करो तो ही मैं खुश होऊंगा। It's an irrefutable fact that Srila Prabhupada wanted book distribution, but that wasn't how he answered this question. How shall we please you the most? तो ये बिल्कुल सत्य है कि प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं कि अगर हम उनकी पुस्तकें वितरण करें, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर केवल ये नहीं है। He answered this question, "You'll please me the most by developing your love for Krishna." प्रभुपाद बोलते थे कि तुम मुझे तब प्रसन्न करोगे जब तुम कृष्ण से प्रेम विकसित करोगे। And how does that happen? By our sadhana, our gradual process of coming closer to Krishna every day, taking another step closer to Krishna every day. तो कैसे होगा कृष्ण से प्रेम विकसित? साधना करके, हर रोज जो हम साधना कर रहे हैं उससे धीरे धीरे कृष्ण से प्रेम विकसित होगा। I hope that answers devotees' questions. थैंक यू सो मच। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वैष्णवी माता जी पूछ रही। Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. Prabhuji, my question is like. Please accept mine. Hare Krishna. That my question is that right now we are feeling so much motivated and inspired by your wonderful class, and we are even feeling very much motivated to serve Shri Prabhupada. But sometimes it happens that as we like continue with our lives and we do our duties, we go for our job or for our studies to school or colleges, so we interact and meet many people, outside people, so we get different kind of sanskars and different nature. We interact with different people with their nature, so uh, sometimes like this feeling which we are feeling right now, and these all thoughts which we are getting, so they like get diverted, and our even our heart, in our chit we get different kinds of desires by associating with different kind of people or being in different situations. So how can we again like think on same thoughts and again get on the track to again please Shri Prabhupada by doing any menial service which we can do to please Shri Prabhupada or please Vaishnavas? माता जी पूछ रही हैं कि अभी तो हम बहुत उत्साहित हैं, लेकिन जैसे हम बाहर के लोगों का संग करते हैं तो दोबारा से हम उनकी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। So there's a few ways to look at this. First thing is, Krishna says in Gita, Sangat Sanjayate Kama, that your desires, your outlook on life is molded by the people you associate with. प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारी जो विचारधारा है और हमारी जो इच्छाएं वो कैसे आती हैं? हमारे संग से। So most devotees are not in the association of devotees all the time. They have, as you said, they're going to school, to college, to workplace, office, business. We're not always in the association of devotees. और हम देखते हैं बहुत सारे भक्त जो है हमेशा भक्त संग में नहीं रह पाते। So we have to learn this art of being internally absorbed. Internally, you're with Krishna. तो हमें ये कला सीखनी होगी कि अंदर से हम कृष्ण के साथ संबंध स्ट्रॉन्ग करें। And developing this consciousness of seeing Krishna everywhere, within everything and within everyone. और ये चेतना विकसित करें कि कृष्ण को हर स्थान पे देख पाएं और हर किसी के अंदर देख पाएं। And then you're always with Krishna, because there's nothing but Krishna in this creation. This is his creation. तब आप समझ पाओगे कि इस पूरे जगत में कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। Prabhupada gave a nice example. तो प्रभु जी एक उदाहरण देंगे। So it's just like a mother may see her child's article of clothing or little booty or rattle, think, oh, it's not the child, but because it's associated with the child, she has some feeling of love, just seeing that which is associated with her child. जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे का कुछ भी सामान देखती है, उसके कपड़े देखती है, उसके जूते देखती है, तो उसको तुरंत स्मरण होता है, ओ मेरा बच्चा, लेकिन बच्चा वहां पे है नहीं, फिर भी उसको स्मरण होता है। So this whole creation is nothing, this is Krishna's creation. Everything about it is his energy and his creation. तो पूरा जगत जो है भगवान की सृष्टि है।
He says in Gita, Rasoham apso konteya prabhasi shashishoreyo pranabas sarvavedeshu shabdake parusham nishu. I'm the light of the sun and the moon, the sound and ether, the ability in man. When we do not see the sun or the moon, Krishna is everywhere and within everything, but we have to develop the art of seeing him in all circumstances of life. तो भगवान गीता में बोलते हैं सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, पानी का स्वाद मैं हूँ, हर जगह तो कृष्ण है, लेकिन हमारे पास ही वो कला नहीं है कि हम कृष्ण को देख नहीं पाते हर समय. And this means being internally absorbed. You're in your heart of hearts, you're with Krishna, regardless of what's going on outside. हमारे अंदर भी, हमारे हृदय के हृदय में कृष्ण है और वो हमें गाइड करते हैं हर सिचुएशन में. Not associating with avoiding the association of non-devotee doesn't mean don't talk to me, leave me alone, I'm Hare Krishna. तो अभक्तों का संग ना करने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे ही हम अभक्त को देखें साथ में बोले मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, मैं हरे कृष्णा व्यक्ति हूँ. So the public should appreciate our good qualities, our gentlemanly or womanly nature, our good qualities, our achar. तो जो साधारण लोग हैं उन्हें हमें देख के प्रोत्साहित होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण भक्त हैं. But we don't take part of their nonsense activity or their nonsense way of living or their nonsense desires. लेकिन उनके साथ ऐसा संग नहीं करना है कि जो कार्य गलत कार्य वो कर रहे हैं वही हम करें. In this way, we're like Krishna says in Gita, Padma Bhattami Vambasa, he recommends to Arjuna, you be like lotus. Lotus flower may be growing in sewer water, but it maintains its purity, its beauty, its lovely scent, even though it's in sewer water. तो भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं कमल की तरह रहो, चाहे कमल जो है खारे पानी में रहता है फिर भी वो अपना अच्छा सुंदरता, अच्छा रूप नहीं छोड़ता. So we have to practice this art of being internally absorbed and seeing Krishna in every circumstance of life. तो इसलिए हमें इसका अभ्यास करने के अंदर से हम कृष्ण को देखें और हर जगह कृष्ण का अनुभव करते हैं. And not being intimate with non-devotees. Be intimate with devotees. Take prasadam with devotees. Serve devotees. Reveal your mind devotees. Give gifts to devotees. Don't do this with non-devotees. This activities, intimacy should be only with devotees. तो हमारा जो अपनापन है, इंटीमेसी है, वो केवल भक्तों के साथ होना चाहिए. Okay? Does that answer your you. question? Yes, Prabhuji, thank you so much. Please give Okay. your blessing. Hare Krishna. Tatastu, be blessed. You're already blessed. My Thank you. blessing would be just like offering diya to the sun. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Anjam. Krishna, thank you so much. Prabhuji, how can we practice this art of seeing Krishna? One Mataji is asking. By practice, only by practice. So आपको अभ्यास करना पड़ेगा प्रेरणा माता जी इसका, तभी हम इसको देख पाएंगे. रघुवीर प्रभु जी, आप अपने आप का वीडियो ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं प्रश्न. Krishna says in Gita, Abhyasa yoga yuktena chetasa nanya gamina paramam purusham divyam yati partanu chintayan. This is Abhyasa, a yoga. This is the yoga of being with Krishna, withdrawing our mind and being focused on the self. अभ्यास करना पड़ेगा. अभ्यास से ही धीरे धीरे अपना मन जो है हम बाकी वस्तुओं से भगवान में ला सकते हैं. Chetasa na anya gamina, not allowing our chinta, our cheta to go to any other thing. और अपनी चेतना को किसी और वस्तु में ना लेके जाना. And it takes practice. Abhyasa means practice. उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा. And the first step of practice is to acknowledge the value of learning how to do that. और इसके लिए अभ्यास के लिए सबसे पहला कदम क्या है कि हम उसके बारे में सुने, कैसे करना है इसको. So this is what Prabhupada means when he says Krishna conscious. You're conscious of Krishna. You're absorbed in Krishna. You're moving through the world, moving through your life, but you're with Krishna. In your heart of hearts, you're always with Krishna. तब आप देखेंगे कि आप कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण का अनुभव कर पाएंगे. Okay. यस, रघुवीर प्रभु जी आप पूछ सकते हैं. Yes. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. Prabhuji, my question is, how we maintain our relationship with devotees. Actually, I am when I'm seeing someone doing seva, then I will always find a fault. Oh, he's doing like this, he's doing like. So how can I prevent myself from this fault-seeing mentality? Prabhuji, in the chat also similar question was there that Prabhupada has told to cooperate, but sometimes it is very difficult to cooperate. So Prabhuji is saying fault finding, and the chat it is also written that how can we cooperate nicely
and keeping our ego aside. So please enlighten. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur answered this question in a particular way. तो प्रश्न बेसिकली ये है कि कैसे हम भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बना सके। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जो है इसका उत्तर देते हैं। He said, I'm so full of faults. How can I find fault in any other person? तो उत्तर ये है कि मैं इतने ही अपराधों और कमियों से भरा हुआ हूँ कि ऐसे मैं दूसरे व्यक्ति में कमी देख सकता हूँ। Another way you can think of it is that how would you feel if you're the recipient of that person's criticism of you? और दूसरा आप ये सोच सकते हैं, अगर कोई आपकी निंदा करे जैसे हम सामने वाले भक्त की निंदा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? Okay, would you be offended? Would you be hurt? क्या आपको बुरा लगेगा? So why should we treat someone else in the same in a way that we don't want to be treated? तो आप किसी और व्यक्ति को ऐसे क्यों उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, अगर आप चाहते हो वैसा व्यवहार आपके साथ ना हो? So we shouldn't be blind to some mistake, but we shouldn't search out mistakes and in insufficiency in other devotees. ऐसा नहीं है कि हमें अपराधों पे बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेनी है, लेकिन उसका एक तरीका है। Trying to become Krishna conscious ourselves is a full-time activity. We shouldn't have any extracurricular activity looking for fault in others. तो कृष्ण भावना अमृत खुद में ही एक इतना बिजी कार्य है कि हम इतने व्यस्त होने चाहिए कि हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए दूसरों की गलतियां देखने के लिए। But as conditioned soul, it's our nature. What to do? Try and be better. लेकिन हम बद्ध जीव हैं, तो ये स्वाभाविक है, हम गलतियां देखते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि नहीं देखें। And cooperate, because in the this movement is meant to be a reflection of the spiritual world. तो कोऑपरेट मतलब आपस में अच्छा संबंध रखने का अर्थ क्या है कि हमें इस इस्कॉन को एक ऐसा प्रतिबिंब बनाना है भगवत धाम का। And there's full cooperation between all the different classes of devotees in the spiritual world. और भगवत धाम में कोई किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता, सब लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। There's 395 different categories of gopis in the spiritual world. तो भगवत धाम में 395 अलग अलग कैटेगरी की गोपियां हैं, पर उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। They all have a different service mood, but they all cooperate for the satisfaction of Radha Krishna. उनका सेवा करने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो लोग आपस में अच्छा संबंध रखते हैं कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। Mother Yashoda's mood is very different from the mood of the cowherd boys. तो जो यशोदा मैया है, उनका जो भावना है वो गोप बालकों से बिल्कुल अलग है। The cowherd boys' mood is very different from the gopis' mood. और गोप बालकों का जो भावना है वो गोपियों से अलग है। The cowherd boys are standing at Mother Yashoda's door. She's fussing over Krishna, dressing him, feeding him, massaging him, fixing his hair. And the cowherd boys, come on, let's go. Come on, let's go. तो यशोदा महारानी जो है इतना प्रेम से भगवान को सजाती हैं, उनके बाल बनाती हैं, उनको तैयार करती हैं, नहलाती हैं, और जो गोप बालक है उन्हें बोलते चलो चलो खेलने चलो, अभी चलो। So when Krishna leaves to go cowherding, all the gopis and Mother Yashoda all become very sad, but the cowherd boys are joyful. तो जब भगवान जाते हैं गायें चराने के लिए, तो गोपियां और यशोदा मैया जो है बहुत उदास हो जाती हैं, लेकिन जो गोप बालक है उनको बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान हमारे साथ खेलेंगे। So there's apparent disharmony, but because Krishna is the center, everyone's happy. तो ऐसा देखने में लग रहा है कि उन सबका भावना अलग है, वो सब अलग अलग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में अच्छा संबंध रखते हैं क्योंकि कृष्ण उनके सेंटर में है। Everyone's blissfully engaged. There's no envy. There's no discord. सब लोग जो है भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। See, in the material world, we also disagree, but when Krishna is not the center, then we become unhappy. तो भौतिक जगत में भी हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं, हमारा लड़ाई होता है क्योंकि कृष्णा सेंटर में नहीं है। So the secret to harmony in society, in our sanghas, in the world, is to put Krishna at the center. तो इसीलिए इस पूरे कृष्ण भावनामृत संघ का एक ही उद्देश्य है भगवान को सेंटर में लाना। And give up the bad habit of criticizing devotees. Take a vow, I will no longer criticize devotees. तो एक संकल्प लीजिए, अब मैं आज से किसी भक्त का निंदा नहीं करूंगा। I will use my critical nature to find faults in myself and be a better devotee. और मैं अपने ये जो मेरी कला है दूसरों के दोष देखने की, उसको मैं अपने लिए यूज करूंगा, अपने दोष देखूंगा और अच्छा भक्त बनूंगा।
It's okay, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Yeah, Please Raghu- bless me so that I can follow your instructions. Okay, Raghavir Prabhu, be blessed by Srila Prabhupada. yeah. Prabhuji, do you have time? There's one another hand raise. Okay, I have little time. I have a program. We do a reading program every Sunday at our home. There's 20 devotees coming here at Yes. 10 o'clock, but I have some time. Okay, this is the last question. Krishna Kishori Mata ji, आप अपना question पूछ Okay. सकते हैं. This is the last. माता जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. हरे कृष्णा माता जी एंड हरे कृष्णा प्रभु जी. माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि है ना, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, लेकिन मेरा ये था कि कहते हैं ना कि भगवान से मतलब कि भगवान के प्लान में हमें वो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, भगवान से मतलब बार बार कह के उस चीज़ का. तो मतलब कि जैसे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो अभी नहीं रहे, तो मैं मतलब पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकती, तो मैं अभी तक मतलब वो इस बात से वो करती हूँ कि ना, काश कि मैंने ऐसा भगवान से कह दिया होता कि मतलब कि मैं उनसे मतलब मेरा यही था कि मैं जब इंडिया आऊंगी तो मैं जरूर मतलब उनसे मिलूंगी. और तो मैं मतलब मैं अभी भी इस बात को लेकर वो बहुत होती हूँ कि काश मैंने भगवान से कह दिया होता कि मतलब कि मैं मिल पाऊं. तो तो हमें क्या मतलब कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए थी, मतलब कि कहना चाहिए था भगवान को, और मैं वेट ना करती रहती. तो क्या मतलब हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ अब इस चीज को लेकर. Okay, thank you, Madhavi. Prabhuji, basically, she's asking, she's from Pakistan, and she is saying that she is very sad because as His Holiness Gopal Krishna Gosai Maharaj has left his body, so she wanted to see Maharaj and have his darshan once, and she's in Pakistan, so she had this desire that she will once come to India and have Maharaj's darshan. So she's saying that she didn't pray to Krishna because she was feeling that we should not interfere in Krishna's plan. But now she is feeling that she should have prayed. So she's asking you that should we pray to Krishna or should we accept whatever his plan is for us? Okay, there are two aspects to this question. Okay, तो इसके दो उत्तर हैं माता जी. The first aspect is, as we discussed previously, that our relationship with Guru is by Vani Seva. तो पहला उत्तर है कि हमारा जो गुरु के साथ संबंध है वो वाणी के माध्यम से होता है. Some of my godbrothers have tens of thousands of disciples. His Holiness Jaya Pataka Maharaj has more than 70,000 disciples. How much Vapu Seva will you get? Practically nothing. तो प्रभु जी बोल रहे हैं उनके जो गुरु भाई हैं उनके इतने सारे शिष्य हैं, तो स्पेशली परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज उनके 70,000 शिष्य हैं, तो हर किसी को तो वपु सेवा नहीं मिल सकता. And the day will come when he leaves this world, as His Holiness Gopal Krishna Maharaj also left this world. तो एक दिन ऐसा आएगा जब जय पताका महाराज को भी जाना पड़ेगा, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज गए. We will all leave this world. This is the nature of this world. एक दिन सबको जाना है, ये इस जगत का नियम है. So the real substance of our relationship with Guru in his physical presence or in his physical absence, our relationship is the same, and that is Vani Seva. तो चाहे गुरु रहे फिजिकली, चाहे हमारे सामने ना हो, लेकिन एक सेवा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, वो है उनकी वाणी की सेवा. So it's very good that you're feeling separation from him. This is a very powerful spiritual emotion. तो ये बहुत प्रभु जी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करें, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है महाराज को याद करके जो है रो रहे हैं और आपको उनसे विरह का अनुभव हो रहा है. This means you have very soft devotional heart. इसका अर्थ ये है कि आपका जो हृदय है वो बहुत ही कोमल है और भक्तिमय है. A non-devotee will think, okay, he died, so what? I'll just get another guru. No big deal. तो अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो बोलता ठीक है चले, तुम्हें कोई और गुरु बना लूंगा. But that intense feeling of separation prepares your heart for meeting. One day we are all together in Goloka Vrindavan. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप क्योंकि महाराज के लिए इतना रो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप महाराज का जो है प्रत्यक्ष संग कर पाएंगे आध्यात्मिक जगत में. So you're also a very brave soul to be living in Pakistan. और वो बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं फिर भी भक्ति कर रहे हैं. So you should pray every day to Krishna to maintain your bhakti. और आपको कृष्ण से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए रोज कि आपकी भक्ति की रक्षा करें. Pray to Lord Nrsingadev and pray to the holy name. नरसिंह देव से प्रार्थना करिए, होली नेम से प्रार्थना करिए. And
look and understand the prayers of our acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Prahlad Maharaj, Narottam Das Thakur, Lochan Das Thakur. और प्रभु जी ने स्पेशली बोला है कि आप प्रहलाद महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इनकी प्रार्थनाओं को समझने का प्रयास करिए. Some prayers are very selfless, pure prayers. Other prayers are not so pure. तो कुछ प्रार्थनाएं जो होती हैं बहुत ही सेल्फलेस, बहुत ही अच्छी हैं. To pray for the association of a devotee is a very pure Krishna conscious prayer. तो सबसे अच्छी भक्ति में प्रार्थना क्या है कि हम एक भक्त के संग की अभिलाषा की प्रार्थना करें. But to pray for money, to pray for some material situation, for prestige, for opulence, these are materialistic prayers. Who else are we going to pray to but God? But they're karma mishra bhakti. They're mixed devotional prayers. तो प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए? एक भक्त का संग. लेकिन हमें ये सब नहीं मांगना चाहिए, धन, स्त्री, घर, एक्सेट्रा. We should pray as our other devotees, as Lord Chaitanya Mahaprabhu himself prayed in the mood of Radharani. Asli shava padaratam pinashtamam darshanam armahatam korotava. That you embrace me, or you neglect me, you crush me, or bless me. Mat prananatas sa evanapar. In any circumstance of life, you're my worshipable Lord. This is a proper prayer. तो सबसे अच्छी प्रार्थना क्या? श्रीमती राधा रानी हमें सिखा रही हैं शिक्षा अष्टकम के माध्यम से कि भगवान से ये प्रार्थना करिए कि आप चाहे मुझे जैसे भी रखिए, चाहे मेरा आलिंगन करिए या मुझे मर्माहत करके छोड़ दीजिए, फिर भी आप ही मेरे नाथ हैं. So you should also, if you're not initiated, there's many wonderful devotees offering initiation in ISKCON. Find somewhere with relationship, establish a relationship with some devotee. There's many good devotees. Establish relationship and be happy with Guru and go on a spiritual life, and end of life, go back to Godhead. तो प्रभु जी बोल रहे हैं अगर आपका दीक्षा नहीं हुआ अभी तो ISKCON में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अच्छे हैं, आप उनके साथ संबंध बनाइए और फिर भक्ति में आगे बढ़िए. And certainly you'll go. You have such nice, soft devotee heart. और प्रभु जी आपका प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका हृदय जो है बहुत ही कोमल है. Thank you so much. Okay, may I excuse myself now? Yes, sir. प्रभु जी थैंक यू सो मच. आपने इतने सुंदर प्रश्न उत्तर दिए, प्रश्नों को सॉरी थैंक यू प्रभु जी. You gave a very wonderful class and answered all our questions and queries, and so wonderful and practical answers. So we all thank Prabhuji and also seek his future association for future such classes. So please everybody is requested to unmute and we can all say Hare Krishna Mahamantra 3 times to thank Prabhuji. Okay, thank you, Riya Mataji, also for your translation work. Thank you to Prabhu. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram. Jai Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanand.